Hi everybody, welcome to the channel. I have been asked about tariffs so many times in my recent interviews that I thought let's make a video which is clear and easy to understand so that you can tackle any question related to tariff that comes your way. So, let's get into it. Starting off with what is tariff exactly? So, tariff in very easy terms, if I had to tell you, it is when we sell a product to some other country, that country imposes tax on these products, right? So if I had to speak a definition that you can also use in your interviews, it would be: a tariff is a tax imposed on imported or exported goods by a country's government, right? So जैसे कि कोई imported good है, for example यूएस ने कोई product हमें sell किया, तो for us, for India, that good is imported good, and country's government, which is India's government, will impose tax on this product. So this tax is called tariff. Okay. Now, why are tariffs exactly imposed? So as I said, first point is to protect domestic industries. ये बहुत major चीज है. Even US जो अपने tariffs अभी increase कर रहा है, लगा रहा है, that is mainly to protect the domestic industries. Okay. So this tariff makes imported goods more expensive and encourages people to buy locally made products, helping domestic businesses grow. अभी domestic businesses grow क्यों करनी चाहिए? It is because जब हम locally made products होंगे, मेक इन इंडिया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया में, so इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स हमारी ही कंट्री में बनाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू. तो हमने ये भी देख लिया था कि जो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो मनी गवर्नमेंट के पास चले जाता है, विच कैन बी यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड पब्लिक सर्विसेज. उसके बाद होता है टू करेक्ट ट्रेड इम्बैलेंसेस. तो अगर एक कंट्री है जो इंपोर्ट करती है ज्यादा, इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स फार मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट. मतलब अगर जैसे अभी यूएस में ट्रेड डेफिसिट है, तो अगर यूएस खरीद ज़्यादा रहा है सामान दूसरे कंट्रीज से बट बेच कंपैरेटिवली कम रहा है, देन इट इज सेड टू बी ट्रेड डेफिसिट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल रीजंस. तो समटाइम्स टैरिफ्स आर यूज्ड टू प्रेशर कंट्रीज इनटू चेंजिंग ट्रेड पॉलिसीज और पॉलिटिकल डिसीजंस. जैसे कि अभी यूएस काफी बार हिंट कर रहा था टुवर्ड्स imposing tariffs, increasing the taxes, and it called India as tariff king. So all of these reasons resulted in Indian government reducing the taxes for US, right? We reduced 100. We had 100% tax on Harley Davidson bike earlier, but we reduced it to 50%. Now let's talk about history of tariffs. You don't really have to memorize it. Just keep a little background of it. So in 2018, during the first term of Donald Trump as president, he called India the tariff king because of India's high import duties on American goods. He particularly criticized India for imposing 100% import duty on Harley Davidson motorcycles. India later reduced this tariff to 50%, but Trump was still dissatisfied. In 2018, Trump imposed 25% tariffs on steel and 10% tariffs on aluminum imports, including from India, but few countries were exempted. Again, in 2025, he reintroduced 25% tariffs on both steel and aluminum, justifying it as a way to protect American industries. Trump also pointed out that India imposed very high tariffs, which is 100%, 125%, 150% on certain imported goods. These goods are bare minimum, only 5 items, I believe. But nonetheless, India removed these to ease the trade tensions. Another reason for Trump's frustration was the trade deficit, meaning India exports far more to the US than it imports from the US. मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा सामान बेचता है टू यूएस देन कंपैरेटिवली टू कितना वो खरीदता है फ्रॉम यूएस. नो, बेचने वाला पार्ट इज मोर. Okay. Trump believed that India's high tariffs on US goods while enjoying low US tariffs on Indian goods created an unfair trade imbalance. Now, India's attempt to reduce trade tension. A bilateral meeting was scheduled between Trump and Modi on 13th February 2025 to discuss the trade issues, and we were hoping that we might find a way out of these high tariffs. And India also reduced import duties on certain products of US before this meeting to improve the relations and to please
Trump in a way. But just a few hours before this meeting, US announced reciprocal tariffs, making the situation a little more complex. So now comes what I was exactly asked in the interview. I was asked what exactly is reciprocal tariff and why, even before its implementation, there is so much of concern and chaoticness in the Indian market. So let's cover that part now. So reciprocal tax in easy way is if we impose 70% tax on US will impose 70% tax on Indian products. That's it. And the basic idea is if they charge us, we charge them. Right. So that is the idea behind it. Now let's talk about what is like why is it a concern for India? So firstly, for Indian exporters, this will raise cost. फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और फिर यूएस में जो लोग होंगे वो ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स और बिजनेसेस पे फोकस करने लगेंगे तो इसलिए इंडिया का जो मतलब इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी उसके बाद जब डिमांड कम हो जाएगी हमारा बिजनेस रिड्यूस हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो डिपेंड करती हैं यूएस एक्सपोर्ट्स पे वो सफ़र करेंगी और हो सकता है कि जॉब लॉसेस में रिजल्ट करे उसके बाद जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमैटिक होगा बिकॉज हमारे लिए भी यूएस के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और फिर हमें भी ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ेगा Now, let's see the global consequences of reciprocal tariffs. So, if countries keep imposing tariffs on each other, तो जो cost है imported goods की वो obviously rise होगी globally. ठीक है? Next is there will be increased trade wars because countries will retaliate against each other. They will keep increasing the tariffs, and then obviously there will be a trade war because अभी US और China में already है. देन जो अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज हैं जो आ रही है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स हेजिटेंट हो जाएंगे स्पेशली टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेसेस और फोर्थ चीज़ जो इन सारी चीज़ों की वजह से होगी वो होगी इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो क्या बैकफायर कर सकते हैं ऑन यूएस दे कैन बिकॉज जो बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेती हैं एट चीपर रेट्स विद टैरिफ्स ये जो मटेरियल्स हैं रॉ मटेरियल्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा तो यूएस मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर रॉ मटेरियल्स और फिर वो फाइनली जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका प्राइस इंक्रीज कर देंगे और एंड दिस विल मेक देम मोर एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन बायर्स नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ग्लोबल मार्केट्स तो अगर ये सब चलते रहेगा टैरिफ्स एंड एवरीथिंग तो इंडिया जो है और दूसरी कंट्रीज भी सब ऑल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स देखेंगे जैसे इंडिया अभी इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स ट्रेड पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा तो इस वजह से जो यूएस के बिजनेसेस हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट्स लूज करने लगेंगे तो दे नॉट हैव इनफ कंट्रीज वेयर दे कैन एक्सपोर्ट देयर ओन गुड्स राइट उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि ये जो मार्केट्स उन्होंने लूज़ किए उस वजह से जॉब लॉस हो जाएगा right? So thank you so much for listening and watching this video. If you have anything in mind about this, any additional comments, please do put it in the comment section. Also, agar recently, if you were asked any question related to current affairs, please do write it in the comment section because in that way we all can stay updated and we'll know what is being currently asked in the interviews. All right. Thank you so much.